welcome to Rawalpindi. It's time for Bahria Town Champions T20 Match 1. Nurpur Lions taking on UMT Markhors. So the news from the center is that UMT Markhors have won the toss and they will bowl first. Kharjan waiting for the clock to tick over. It has now. Play has been called. Plenty of movement, no control, and heavy price. 5 wides to begin with. Got it through. And will get to the boundary. This Pindi outfield is always very, very fast. You get full value for your strokes. Zishan off the mark with the boundary. Imam goes down, the wicket smashes him. That's a boundary. What a start from the Nurpur Lions skipper. It's in the air. Hasn't hit it cleanly. Oh, what a catch. What a brilliant catch. Fakhar Zaman, talk about his fitness. He's shown he is still as agile as ever. And first blood to UMT Markhors thanks to brilliant Fakhar Zaman. 2 overs gone. Nurpur Lions are now 14 for 1. Rode the bounce nicely. That's boundary. And Hassan Nawaz showing his talent here. Really got nicely over the ball. Too much bounce on that occasion. Even Khaja Nafe couldn't get to it. A boundary. More extras. और इशू को यहां पर अच्छा फोर्स किया है हसन नवाज ने दिलकश अंदाज में खेला बॉलर के सर के एन ऊपर गेंद सीटी बजाती चली गई और पुल शॉट खेला ये शॉट गेंद थी झपट पड़े इस बार और एंगल के खिलाफ ये 4 रन आए और पीछे हटे और इसे उठाकर खेला ये शानदार हिटिंग दूसरा चौका उम्दा शॉट खेला नीट शॉट खेला हसन नवाज ने और ये शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से और फिर एक बार शॉट लेंथ और हसन क्योंकि दराज का है रीच ज्यादा है उसको फ्रंट पे उन्होंने खेला है अब जगह बनाकर खेलना चाहते थे लेकिन शहजाद ने कैच लिया कवर्स में शायद बैट के ऊपर वाले हिस्से में लगा है और लूपी कैच की हसन नवाज एक अच्छी फ्लैशी इनिंग खेलकर 22 रन बनाकर आउट और 48 पे 2 इस गेंद को चलता कर दिया पहली गेंद पर ऑफलाइन थे मोहम्मद नवाज और यहां बाउंड्री का मौका मिला ये बड़ा शॉट है और पॉइंट पे एक फील्डर के लिए मौका और इस बार मौका नहीं गवाया उन्होंने ये बिल्कुल परफेक्ट डिलीवर किया बॉल को हाफ एंड हाफ फुट आगे और पीछे लाइन के आसान कैच इमाम 13 रन्स बनाकर आउट हुए और नूरपुर लायंस तीसरी विकेट गवाई उन्होंने 59 के स्कोर पे Goes big. Take that. The switch hit. With up and over shouts of catch it. Fakhar Zaman coming around. Got. Wow, what an effort. Gets 2 hands to it. It's Abdul Samad. Fakhar was coming from long off. Samad from long on. And the ball popped out of his hands when he hit the ground. Once again played in the air. And this time he completed the catch. Nawaz is the fielder. Covered more than 10 yards. That was an abrupt ending, but he grabbed the ball and never let it go. Sarwar Afridi, no trouble here. But have a look at that. Just hit him slightly high on the bat, and Taha knew as soon as he made the contact, but still work to do for Nawaz, and he's done it brilliantly. Tumbling take to send away Muhammad Taha for 9. Nurpur Lions 78 for 4. Able to change their gears.
Oh, that was a lapse on part of Imran and a boundary given away. A gift indeed for away Zafar. Watch out for his googly. This is in the air and taken. It's once again Nawaz. He's been busy in the field. First wicket in T20 cricket for young Saad. That was the fourth reverse shot being tested by Ruhail Naseer and was never in position to play that shot. Half of them are back. Ruhail Naseer now gone. 16 was his score. Now they are 86 for 5. वो खूबसूरत पल दिया था जिसकी बड़ी जरूरत थी शिद्दत से और इस चौके की भी जरूरत थी शिद्दत से शानदार शॉट खेला वैसे ऑफ द बैक फुट और कोई मोहलत नहीं मिली डीप पॉइंट को 4 रन के लिए एक बार फिर शॉर्ट गेंद लेकिन ये सीधी गई डीप मिड विकेट के हाथ में एक और विकेट गिरी नूरपुर लायंस की 106 पर 6वां खिलाड़ी आउट हुआ और इमरान का जो शॉर्ट बॉल था वो काम कर गया एक बार फिर और जिस मकसद के लिए ये लेंथ की जा रही थी आमिर यामीन ने ओब्लाइज कर दिया इस तरह छठे बैट्समैन जिनको मुंह की खाना पड़ी शॉट खेलते हुए 8 रन बनाए यामीन ने 106 पर 6 ठीक है लगा 4 रन मिल जाएंगे इस बार सीधा ड्राइव डाउन द ग्राउंड 2 रन के लिए वापस जाएंगे और 4 रन हो गए शायद ये नवाज जो है बाउंड्री सिग्नल कर रहे हैं और यहाँ पे लगता है सिर्फ फील्डर को पता है कि 4 रन हुए हैं बाकी सब फैसले के मुंतजर लगते हैं यहाँ ये अच्छी प्लेसमेंट थी ओवैस की जानिब से और ये झुकना चाहिए था यहाँ पर मोहम्मद नवाज को सहल पसंदी का उन्होंने मुजाहरा किया अंपायर का इशारा 4 रन और 15 ओवर के अख्ताम पर 115 पे 6 ऐसा अच्छा क्रिकेट पिच है ये हालांकि विकेट्स गिर रही हैं लगातार ये बॉल शॉट है और इस बार खासा वक्त मिला बैटर को कि इसके नीचे से इसको लिफ्ट करें और इसे पहुंचा दे बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए और एक बार फिर गुगली की कोशिश लेकिन लेंथ जो बैटर के लिए आइडियल और नतीजा भी इस बार मिड ऑफ के फील्डर पीछे रह जाएंगे और ये आखिर में लाजवाब कैच ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया वहां पर अब्दुल समद थे वो दौड़े चले आए अच्छी फिटनेस उनने दिखाई और फ्रंट फुट चेक कर रहे हैं यहां पर जो कि बिल्कुल बेहतरीन जगह पर है और एक छक्का लगा अभी और फिर वही चीज हमें देखने को मिली कि गेम अवेयरनेस किसी मौके पर यह नहीं लगा कि बड़ा हिट मारने गए हैं छक्का मारने गए हैं सिर्फ लिफ्ट किया बॉल को शायद अजीज ने और 11 रन बनाकर पवेलियन में वापस जाना होगा 7वें विकेट के नुकसान पर 121 रन More runs for Musa and this time he will earn a boundary. Crucial runs for Nurpur Lions. Helped on its way. Just created that length by moving right across his stumps of As. And he's holding the fort for Nurpur Lions. This time got the connection, almost played into the gap and earned a boundary. Yorker to finish off the innings. Brilliantly bowled by Imran. Just a single will mean that Nurpur Lions will finish on 150. Nurpur Lions were sent into bat. Zishan and Imam opened the innings. Imam was among the scoring options, but after them, and especially when Hassan Nawaz was out there, they were looking good, but kept losing the wickets in regular intervals, especially until 86. They lost 5 wickets, but then came away Zafar. He remained not out in his first ever T20 game along with Musa, contribution 10 runs, and in the end, they catapulted to 150 runs and made a game out of it. Akif, good to see him making a comeback, although he went wicketless. 4 for 35. Wickets were shared by Saad, Sarwar Afridi and Nisar, who bowled brilliantly up front with the new ball. 15 dot balls out of his 24. That was a terrific spell of bowling. Generally the fielding and catching was very good as well from UMT Markhors.
Right on money, Amir Yamin on the very first delivery. What do you make of the conditions, especially the pitch, after seeing the first innings? Because the bounce was at times quite steep, but at times not too much. A strong appeal by Amir Yamin and given by the umpire. He took a long time to declare Khwaja Nafi out. A big wicket indeed. Khwaja Nafi is an exciting player, but right on the very first delivery. Everybody in the country knows that Amir Yamin's new ball comes back into the right handers, and it was strange to see Nafi, no feet at all in the stroke. Nafi, for some reason, was stuck in the crease, and he has to pay the price. Goes for a duck of the first ball. Barrier Town Champions Cup T20 2024. And here he is, first ball, aggressively down the ground. This is the brutal Fakhar Zaman for you. Down the track, straight as an arrow. And finally the first boundary from the sailor. And this time he goes, swats it between square leg and short fine for another boundary. Well, this time it's a ramp stroke. This time it's up in the air and the fielder is under it, and he takes a simple catch. Once again Shahzad looking to go big, and this time the ball was short but outside off stump. So Zishan Malik took that great catch. He's the local boy and he knows the familiar surroundings of Rawalpindi. Shahzad is back in the hut. UMT Markhors are now 30 for 2. हवा में खेल गए और कैच गिरा गया। और यहां पर फैसल अकरम थे, उन्होंने ये संगीन गलती की। खासी मोहलत थी, उन्हें ज्यादा हिलना भी नहीं पड़ा अपनी जगह से, और ये खतरनाक साबित हो सकता है। फखर जमान थे, यहाँ उनका घुटना टच हुआ और जो बाउंड्री रोप है वो हिल गई। और शॉट सनसनीखेज, बेदर्दी दूसरा नाम है फखर जमान की बैटिंग का। फ्रंट लेग को क्लियर किया ऑफ स्टंप के बाहर, वो तलाश में थे मौके की, गेंद फुल थी और हल्का सा कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने गेंद को मिडल किया, काफी दूर जाकर गिरी। एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर। लाजवाब मौसम है क्रिकेट के खेल के लिए, और ये लाजवाब पिच भी है स्ट्रोक प्ले के लिए। 4 रन मिल गए सरमद को, और फिर से यहां पर मौका है, और ये फील्डर कैच इस बार नहीं गिराने वाले थे। वहां पर फैसल अकरम थे, उनने मुदावा कर दिया अपनी पिछली गलती का जो मूसा की गेंद पर की थी। बहुत ही ब्राइट दिन है रावलपिंडी में, तो ये वाइट बॉल है, जब ये ऊपर जाता है हल्के से सफेद बादल भी मौजूद हैं, तो बॉल को लाइन अप करना बहुत मुश्किल है। यहां भी आप फैसल अकरम को देखें, इस तस्वीर से आपको अंदाजा होगा, काफी लो डाउन लिया, लेकिन जब बॉल के साथ उठे तो चेहरे पर मुस्कुराहट और इत्मीनान, क्योंकि ये बड़ी विकेट थी और अब इस मैच का रुख बदलने का इम्कान है, क्योंकि फखर जमान डेंजर मैन मैच विनर आउट होकर वापस जा रहे हैं 28 रन बनाकर। यूएमटी मार्कोर्स 49 पर 3। गेंद निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। इन पर बड़ी नजरें रहेंगी, और यहां विकेट कतई तौर पर मुश्किल पेश नहीं आई। एलबीडब्ल्यू आउट हो गए समद। अक्सर बैटर अपना वेट ट्रांसफर करने में कामयाब नहीं होते, जाहिर है पीछे के बॉल का सोच रहे होंगे समद। आप देखिए बिल्कुल आगे गिरा हुआ गेंद था, अपनी शेप खो बैठे और विकेटों के बिल्कुल सामने। शायद को पहले ही ओवर में बड़ी कामयाबी मिली, समद वापस हुए सिर्फ 6 रन बनाकर। यूएमटी मार्कोर्स 58 पर 4। वो हवा में थी, मुश्किल पार किया एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को, और उसके बाद बाउंड्री तक जा पहुंचे मोहम्मद नवाज। और इस बार फ्लैश या ऑफ स्टंप के बाहर, और अच्छी खासी यहां पर ढील मिल गई थी मोहम्मद नवाज को। They got the fast bowler and they got the prize. Nawaz played in the air. What an afternoon for Shahid. He got the prize wicket of experienced Nawaz. Yes, front foot check and it's perfect.
Once again, the ball was on the shorter side and head width on it. When Nawaz saw the ball, his eyes lit up. It had stroke written all over it, but stroke it straight to point. Nawaz, after hitting a couple of good blows, has to go. 11 he got of 10, and it's now 5 down for the UMT Markhors, and his score is on 78. The week which will go on until Thursday, and this time this is a big shot by Iftikhar, typical for him, slog sweep, and welcomed for this over Faisal Akram with a 6. Faisal Akram looking to give the ball the air, but choosing a wrong batter to do that too. And it was in the arc for him. तो आखिरी गेंद और इससे फुल टॉस बना लिया. इस बार अच्छा वार किया, लॉन्ग ऑन से दूर 4 रन के लिए. यहां सरवर अफरीदी इस इनिंग्स को 4 चांद लगा रहे हैं. ये शानदार छक्का. वाइट्स की टीम के लिए ये विकेटें लेते रहे और यहां पर भी एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया. थोड़ा सा वाइड ऑफ द क्रीज भी गए थे, शायद एंगल देखना होगा, क्या एंगल क्रिएट किया. यहां तो मसला नहीं है, अंदर आती हुई गेंद थी, बैक लेग पर जाकर लगी. गेंद ने ज्यादा फासला तय नहीं करना था. अंपायर इमरान जावेद ने पीडी की विकेट के बाउंस और एंगल को देखा और उसके बाद उंगली फिजा में बुलंद की. सरवर अफरीदी को भेजा वापस. 16 रन बनाए यूएमटी मार्कोर्स 104 पे 6. और इससे चलता किया लॉन्ग ऑफ से बाला बाला. और ये बुलंदो बाला छक्का इफ्तिखार अहमद का. उस हिटिंग आर्क जिसकी बात कर रहे थे, इस मरतबा बॉल उसमें आ गई. Came down the track, and that is scoped and out of the park. What a glorious shot in the end. Picked it up early and played a maximum. That's a pretty decent stroke, a cricketing one. Just have a look at this. And the good thing about this shot was that his head position was still. Once again, goes big, over cover, and this is huge. This is 6 maximum. The required scoring rate of less than 100. A youngster against another came down the track and played in the air. A lot of bottom hand in that shot. Iftikhar down on one knee and played in the gap. And this is the way to finish it in style. Saad, the Rawalpindi boy, has brought them home. UMT Markhors has won the curtain raiser of Barrier Town Champions Cup with 4 wickets and an over to spare. They performed remarkably well, and congratulations to UMT Markhors. They started the proceedings with a couple of wickets. Abdul Nafi and Shahzad lost their way, and also Abdul Samad could not get going. Fakhar Zaman was the key, and when he went back to the hut, they were looking in dangerous position. But then Iftikhar came, he played a sensible knock. Nawaz and Sarwar played an hand innings, and Saad Masood was clearly the star of this afternoon. Yes, and the bowling card for Nurpur Lions wasn't very impressive. Amir Yamin 3 overs 29, expensive he was, just took 1 wicket. Salman was very impressive, 4 overs 15 dots, so nearly 2.5 overs, gave away 21 and took 3 wickets. Musa 4 overs 37, mighty expensive this in the context of the game. Shahid bowling 4 overs, giving away 27 for 2. Both the youngsters, Salman and Shahid, doing a decent job. And Vessel was also very expensive, 4 overs 35 he gave away, and total they had wasn't enough for this bowling lineup.